Hello everyone, welcome to your another session of history. Today we are going to continue with chapter 1 Sources of History. Our today's objective is students will be able to evaluate the credibility of sources of history from medieval period. So in our last session we understood how to analyze any source of history. एंड एनालाइज का मतलब मैंने आपको बताया था हाउ टू डू डिटेल स्टडी ऑफ एनी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट? वो सोर्स कहाँ से आया है, हु क्रिएटेड इट, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, व्हाई वाज इट क्रिएटेड. सो we did detailed study of any source of history, right? Today we are going to evaluate. The skill is evaluate. And what are we going to evaluate? The credibility of sources of history. यानी वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है या कितना फेक है. ओके, वी आर गोइंग टू सी वेदर द सोर्स इज real, it is authentic, or is it fake. All right, now let's move on to something that we something that we already know. So what did we do in our last session? So we already know our steps to analyze any source, right? What are the steps? First is, what do I know about the source? मुझे source के बारे में क्या पता है? So after looking at this picture, I know that this picture is actually a book, right? Shivaji the Great Maratha from Ranjit Desai, right? It is a book written on Shivaji Maharaj by Ranjit Desai. Where did I find the source? ये source मुझे कहाँ से मिला? So obviously I found this source from internet. So I will write, I did research on internet. When was it created? So when this book was created, you can find it out from internet कि ये book कब बनाया था रंजीत देसाई ने. Why was it created? Same thing, you have to find out the purpose, right? Ranjit Desai has written about Shivaji Maharaj. There has to be a reason why he has written about Shivaji Maharaj, and what was the specific topic he was focusing on, है ना? शिवाजी महाराज के बारे में सब चीज़ें तो नहीं बताया रहेगा, या तो सब चीज़ें बताया है तो क्यों बताया है, या तो फिर सिर्फ ये बताया है द ग्रेट मराठा. शिवाजी महाराज एक बहुत ही ग्रेट मराठा थे. तो ये क्यों टॉपिक लिया है ये बुक में, राइट? सो व्हाई वाज इट क्रिएटेड? So these are the four questions that we always ask to ourselves in order to analyze any source. We'll move forward now. Okay, so these are your steps to build skill for evaluating the credibility of any sources of history. First and the foremost step is to see whether is it a primary or secondary source. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस. प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जो कि ओरिजिनल होता है. से फॉर एग्जांपल एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, या फिर एन ओरिजिनल स्कल्पचर, मॉन्यूमेंट. दिस ऑल आर प्राइमरी सोर्स. तो if you'll take an example of शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के केस में प्राइमरी सोर्स वो होगा जो कि शिवाजी महाराज ने खुद से लिखी है. सो इफ द बुक इज रिटन बाय शिवाजी महाराज itself, then that book is a primary source about शिवाजी महाराज life. Secondary source would be a source which is taken from primary source. ओके, सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि मैंने शिवाजी महाराज की लाइफ के बारे में शिवाजी महाराज की बुक से पढ़ी है, एंड देन आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन इट दैट मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये बुक पे मुझे ऐसा ऐसा चीज़ें पता चली है. सो दैट इज एन सेकेंडरी सोर्स. यानी मैंने प्राइमरी सोर्स का रीडिंग करके या प्राइमरी ऑब्जेक्ट को देख के मैंने कुछ उसके बारे में लिखा है. ओके, सो दैट वुड बी अ सेकेंडरी सोर्स. ओके, व्हाट डू आई सी और रीड, यानी मैंने वो सोर्स के बारे में जो मेरे पास दिया है, व्हाट कैन आई सी, व्हाट डू आई सी अबाउट दैट सोर्स, और व्हाट कैन आई रीड, व्हाट डू आई रीड. मुझे वो सोर्स के बारे में क्या दिख रहा है और मैं क्या पढ़ सकता हूँ. वेयर डिड आई फाइंड द सोर्स, मुझे ये सोर्स कहाँ से मिला. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट, राइट ऑन दैट
Where did I find the source? The same question we asked to analyze. Why was it created? Same question. हम ये एक सोर्स को क्यों बनाया था? Why was this source created? And is the source reliable or not? Reliable का मतलब क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं? ये सोर्स पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं? So these are the 5 questions that you're going to ask yourself in order to evaluate the credibility of sources of history. Alright, now we'll see what is actually evaluating the sources. So this is a picture that I have taken from your textbook. Evaluating the sources of history. It is necessary to take certain precautions before using these sources of history. We have to examine their authenticity and see which are genuine and which are fake. So it is very important to um, you know evaluate any source before using it. हम कोई भी सोर्स यूज करने से पहले उसको एग्जामिन करना, उसके बारे में समझना कि ये चीज रियल है या फेक, बहुत जरूरी है, राइट? सो वेन एवर वी गेट एनी व्हाट्सएप पे कोई भी न्यूज आता है, राइट, कि इसका डेथ हो गया या फिर फ्लड आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू एनी वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी सोर्स, कोई भी न्यूज होता है विच वी आर गेटिंग ऑन व्हाट्सएप. So it's very important to evaluate the source, to analyze, to see कि वो सोर्स ऑथेंटिक है या नहीं, वो सोर्स रियल है या नहीं. ठीक है? Their quality can be determined with the help of internal standards. We also have to study the integrity of the writers, their personal interests, the period in which they live, and the political pressures on them. तो जो भी राइटर होता है, जो भी वो सोर्स के बारे में लिखा है, सो वी हैव टू सी all the different aspects. Also we have to see the integrity of the writer, फिर उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या था वो राइटर का, कौन सी पीरियड में वो रहता था, वेदर ही यूज्ड टू लिव इन मॉडर्न एरा, मॉडर्न पीरियड में या मिडिवल पीरियड में, and political pressures on them. Political pressures मतलब whether he was favoring one political side or he was favoring another political side, right? जैसे शिवाजी महाराज के बारे में लिख रहा है, so whether he is neutral or not about शिवाजी महाराज, और या फिर फेवरेटिज्म कर रहे थे, शिवाजी महाराज was my favorite king, therefore I am writing about शिवाजी महाराज. So if he is taking political side of शिवाजी महाराज, so that means there has to be a political pressure on him. उसे किसी ने इतना प्रेशराइज किया होगा, या फिर उसके बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में लिखने के लिए उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि आई एम राइटिंग इट बिकॉज शिवाजी महाराज वॉज माई फेवरेट किंग. सो उससे हमको ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिलेगा शिवाजी महाराज के बारे में. So therefore it is very important to see the personal interest of the writer as well as to see the political pressure on him or her. It is also important to see whether they rely on hearsay or give an eyewitness account, right? So ये भी बहुत important होता है, क्योंकि हमको व्हाट्सएप पे बहुत बार ऐसा मैसेज आता है कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है, ये मुझे भैया ने फॉरवर्ड किया है मैसेज, राइट? तो क्या तुमने देखा है भैया ने फॉरवर्ड तो किया है मैसेज, बट हैव यू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑन इट, कि क्या तुमने उसका मैसेज, भैया का मैसेज पढ़ने के बाद में तुमने वो चेक किया कि कितना रियल है वो मैसेज, कितना ट्रू है या कितना फेक है, राइट? सो देयर हैज़ टू बी authenticity and you have to be very firm to evaluate the source. We need to consider the exaggeration, metaphors and other literary devices they use. Exaggerations में बहुत बड़ा चढ़ा के बात किया है उसके शिवाजी महाराज के बारे में, या फिर कोई भी सोर्स के बारे में अगर बहुत बड़ा चढ़ा के बात किया है, तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दोज थिंग्स also. Their information has to be verified with the help of other contemporary sources, right? बाकी के दूसरे सोर्सेज से उसके इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए, देखना चाहिए कि
उसके और कोई दूसरे प्रूफ है या नहीं. ओके. द इंफॉर्मेशन में बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सैजरेटेड. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था शिवाजी महाराज के बारे में कि बिकॉज शिवाजी महाराज वॉज माई फेवरेट किंग, देयरफॉर वो शिवाजी महाराज के बाद में बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ ऐसा बताने के लिए कि शिवाजी महाराज ने एक्चुअली कितने फोर्ट्स कैप्चर्ड किए थे, उसने कुछ ज़्यादा ही फोर्ट्स बता दिया कैप्चर्ड किए थे. सो दैट वुड बी अ फॉल्स एग्जाम्पल, राइट. फॉल्स स्टेटमेंट होगा, so एक exaggeration हो जाएगा. so we have to take into consideration those exaggerations also कि सच्ची में इतने फोर्ट्स कैप्चर्ड किए थे कि नहीं, क्या ये बुक में बराबर बता रहा है कि नहीं. सो यू देयर हैज़ टू बी अ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑल्सो. मतलब नेट पे जाके वो सोर्स के बारे में और पढ़ाई करना ज़रूरी भी है कि ये बुक में मुझे ये पता चला है, तो क्या ये बुक के बारे में जो पता चला है इज़ दैट ट्रू और इज़ दैट फेक. इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. ओके, एकदम न्यूट्रल होके वो चीज़ के बारे में पढ़ाई करना चाहिए. द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस. यू हैव टू डू अ वेरी क्रिटिकल एनालिसिस. एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा है, डिटेल स्टडी करना चाहिए अबाउट द सोर्स. The author's impartiality and neutrality are very important in writing history, right? You have to be very neutral if you are writing about something which happened in the past. अगर past पे कुछ event हुआ है about, if you're writing about Shivaji Maharaj, if you're writing about medieval period के importance, anything, you have to be neutral. You cannot do favoritism, okay, or you cannot be on one side. Alright, now we'll move forward how to analyze any source. Okay, so these are the two pictures which I have taken from internet. Picture 1 is about a painting of Shivaji without his headgear. Headgear मतलब वो जो उस सर पे पहनते हैं. ओके, जो राजा लोग सर पे पहनते हैं, that is called as headgear. With his wife during his coronation in रायगढ़. रायगढ़ पे जब शिवाजी महाराज को महाराज बनाया जा रहा था, right, when he was becoming the king of Maratha Empire. So this is the painting of that period, and this painting was uh, there is no source of who made this painting, but this photograph was taken by Kunal Patil. क्या आपको कुणाल पाटिल का नाम दिख रहा है? If you will see after Raigad in bracket, it is written Kunal Patil. Okay, he was a photographer in Hindustan Times. So Hindustan Times is a newspaper in which this photo or this source appeared. Now if you will see the second picture, life of Shivaji in 120 paintings. Mumbai to host exhibition on Maratha King. Okay, so the headline says life of Shivaji in 120 paintings. So there were 120 paintings which is, describe the life of Shivaji Maharaj. And ये paintings क्यों बनाए थे? Because there was an exhibition on Maratha King, means there was an exhibition on Shivaji Maharaj in Mumbai. Even as the Maharashtra government mules building a 300-foot high statue of Chhatrapati Shivaji in the sea of the Mumbai coast, the city will soon play host to a unique tribute to the great Maratha. ठीक है, तो वही दिया है कि जो शिवाजी महाराज था उसके बारे में मुंबई सिटी इज गोइंग टू होस्ट एन एग्जीबिशन. नाउ इफ यू सी द पिक्चर डाउन, देयर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी एट द जहांगीर आर्ट गैलरी इन मुंबई. मुंबई में एक आर्ट गैलरी है जिसका नाम है जहांगीर आर्ट गैलरी, विच इज इन मुंबई. साउथ बॉम्बे में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये आर्ट गैलरी मिलेगी. ओके, एंड ऑल्सो सो दिस पोर्ट्रेट इज इन जहांगीर आर्ट गैलरी. नाउ अब ये सोर्स क्रेडिबल है कि नहीं, एक्चुअली में ये पोर्ट्रेट जहांगीर आर्ट गैलरी में है या नहीं, वी डोंट नो, राइट. सो बट दिस फोटो is taken by the photographer Kunal Patil, Hindustan Time का. So this photo appeared in Hindustan Times. Now I have to check the credibility, I have to evaluate the credibility of this source, right. ये जो न्यूज़पेपर में फोटोज आए हैं, I have to check whether this photos are authentic or fake. So picture 1 में पेंटिंग दिया है of शिवाजी महाराज without his headgear during the coronation.
and picture 2 में भी painting दिया है of Shivaji Maharaj, right? Both of these paintings were a part of exhibition on Maratha King in Mumbai, right? And both of these paintings appeared in Hindustan Times, was taken by the photographer called Kunal Patil. Alright, so these are the questions. You can pause your video here and you can draw this table in your notebook. Okay, हम ये questions को table के form में लिख के answers करेंगे. So primary or secondary source, right? First question क्या था? Is it a primary or secondary source? So the first picture that we saw, in that picture it was the secondary source. Secondary source था क्योंकि वो एक पेंटिंग पहले से गैलरी में है और वो पेंटिंग को न्यूज़पेपर में दिखाया है, राइट? इट इज नॉट आई एम who actually went there and saw that painting or who actually talked to the painter, right? So जो पेंटर था उसने वो फोटो नहीं दिखाया. It was the photo appeared in a newspaper called as Hindustan Times. So that means it is a secondary source. What do I see or read? मैंने क्या देखा अभी पेंटिंग में, फर्स्ट पेंटिंग में? So there was a painting of Shivaji Maharaj without his headgear during his coronation. This is what I saw and read. Where did I find the source? ये source मुझे कहाँ से मिला? So I found the source from a newspaper called Hindustan Times. Hindustan Times करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें से मुझे ये पिक्चर के बारे में पिक्चर मिली. Why was it created? Why the source was created? So why, right? You have to find out the reason कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में इसका फोटो क्यों आया था. Why it was created? It was created to celebrate life of Shivaji Maharaj during an exhibition in Mumbai, right? आप ऐसा भी लिख सकते हो that the source was created uh, to celebrate के बदले आप लिख सकते हो to show that there is an exhibition happening in Mumbai on the life of Shivaji Maharaj. शिवाजी महाराज की लाइफ पे एग्जीबिशन हो रहा है मुंबई में, राइट? सो दैट इज द रीजन हिंदुस्तान टाइम्स ने ये दो पिक्चर्स का ये दो पिक्चर्स अपने न्यूज़पेपर में इंक्लूड किया था, ये दिखाने के मुंबई में शिवाजी महाराज पे एक एग्जीबिशन हो रहा है. So the source was created to celebrate life of Shivaji Maharaj during an exhibition in Mumbai. Is it reliable or not and why? Now, अगर ये reliable है मतलब आप इस पे भरोसा कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, और अगर ये fake है तो क्यों? The source is reliable. Now you have to give the reason. Because why it is reliable? Because I know the name of the newspaper. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया था. अगर मुझे न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया रहता तो आई कैन नॉट चेक इट्स रिलायबिलिटी, राइट? कि रियल है क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा जब मुझे न्यूज़पेपर का नाम ही नहीं पता है किस में आया था. बट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज रिटन, द नेम ऑफ द फोटोग्राफर इज ऑल्सो रिटन. दैट मीन्स द सोर्स इज रिलायबल. That means I can talk to that photographer whether he actually clicked that photo or not. I can talk to the newspaper author, newspaper ka editor, whether he actually edited that photo or not, right? So if the name of the newspaper and name of the photographer is written, or if the name of the newspaper is only written, that means the source is reliable. Okay, so the source is reliable because the name of the newspaper and the photographer is written with the source. Now if you look at the second painting में क्या था? A portrait of शिवाजी महाराज at जहांगीर आर्ट गैलरी, एक प्लेस है जहाँ पे शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट है, मीन्स पेंटिंग है, और वो भी किसने क्लिक किया था? हिंदुस्तान टाइम्स में कुणाल पाटिल ने. Alright, so we will evaluate the second painting. Whether it is a primary or secondary source, it was a secondary source. What do I see here? Read a painting of Shivaji Maharaj at Jahangir Art Gallery. Where did I find the source? I found the source in local newspaper, which is called in a newspaper called Hindustan Times. Why was it created? So the source was created to celebrate life of Shivaji Maharaj during an exhibition in Mumbai. Right? वो जो headline दिया था, life of Shivaji in 120 paintings. Right? So there were total 120 paintings which were exhibited in Mumbai. The source is reliable or not?
So the source is reliable because the name of the newspaper and the photographer is written with the source, right? It is reliable because मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि वो न्यूज़पेपर के बारे में मैं जानता हूँ कि वो न्यूज़पेपर कौन सा है, और वो फोटोग्राफर के बारे में भी मैं जानता हूँ वो फोटोग्राफर कौन सा है, right? So for evaluating any source, the most important thing is to find out whether you can rely on that source or not. आप वो सोर्स पे भरोसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. अगर आपको सिर्फ पेंटिंग दे दिया है और आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताया नहीं है कि ये कहाँ से ली गई है या किसने दिया है या कहाँ से मिली है, क्यों बनाई गई थी, all these questions, if you cannot answer all these questions, that means the source is not reliable. If you cannot answer why was it created, if you cannot answer where did you find the source, if you cannot answer what do you see or read, that means you cannot rely on that source. So before uh, you know before uh, answering that this source is reliable या फिर मैं ये सोर्स पे भरोसा कर सकता हूँ, you have to answer whether it is whether you have to answer the authenticity of the source, के आपको पहले इवेल्युएट करना ज़रूरी है. तो अभी नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कभी भी व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया साइट पे किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन मिले, first and the most important thing is to answer this 5 questions. Is it a primary or secondary source, right? अगर ये प्राइमरी सोर्स क्या होगा, जो कि उसने खुद ने लिखा है या फिर जो कि वो टाइम के पीरियड पे किसी ने लिखा हो. सेकेंडरी सोर्स क्या हो सकता है, उसके बारे में पढ़ के उसने अपने व्यूज दिए हो. वेयर डू आई सी या रीड, फिर अगर आपको देखना है तो आपने वो फोटो में क्या देखा और क्या पढ़ा, फिर वो चीज़ के बारे में यू कैन राइट डाउन कि वेयर डिड आई फाइंड द सोर्स, कौन से सोशल मीडिया साइट्स आपको मिला है, व्हाट्सएप पे मिला है, इंस्टाग्राम पे मिला है, कहाँ से मिला है, कहाँ पे आपने वो चीज़ पढ़ा था, वाई वॉज इट क्रिएटेड. अब ये इसने फोटो बनाया है तो इसने फोटो क्यों बनाया है और सब लोगों को क्यों बता रहा है, वाई द फोटो इज पब्लिक नाउ, वाई इट इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर एवरीवन, एंड देन वेदर इट इज रिलायबल और नॉट, कि क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं. ओके, we'll move forward now. All right, so this is your activity. These are the 3 pictures: picture 2, picture 3 and picture 4. Picture 2 में if you will see, there is a painting of procession during शिवाजी's coronation at रायगढ़. ठीक है, शिवाजी का जब कोरोनेशन हो रहा था, जो हमने फर्स्ट पेंटिंग में देखा था, सो शिवाजी महाराज रायगढ़ से निकल रहे थे. देयर वाज अ प्रोसेशन. प्रोसेशन मतलब कोरोनेशन का प्रोसेस चल रहा था. पिक्चर 3, a painting of Shivaji examining his ship built by his engineer. He was the first Indian king to realize the importance of building an indigenous navy. This also picture appeared in Hindustan Times. In this picture, what do I see here? I can see that Shivaji Maharaj is looking at the boat, right, or looking at the ship. So this is something that I can see. What do I read? I read that he was the first Indian king to realize the importance of building an indigenous navy. Fourth picture is Shivaji Maharaj strategizing with his commander. तो शिवाजी महाराज कुछ चीज के बारे में स्ट्रैटेजी कर रहे हैं अपने कमांडर के साथ, राइट. So these are the 3 pictures. What you are going to do is you are going to draw a table, write down all the 5 questions, and जैसे मैंने अभी पहले 2 pictures को evaluate किया, you are going to evaluate these 3 pictures. Okay, draw a table, write down all the 5 questions, and then write down the answers for each picture. Picture 2, picture 3 and picture 4. Okay, so with this we have come to an end of our today's session. I hope that all of you understood how to evaluate the credibility of any source of history. It's very simple. If you know how to analyze the source, evaluating is also very simple. Okay, so whenever any news, any new information
that you will get, make sure that you analyze the source first and then evaluate the source. Analyze का मतलब डिटेल में वो सोर्स के बारे में पहले स्टडी करो, वो इंफॉर्मेशन के बारे में या जो भी न्यू नॉलेज मिला है उसके बारे में स्टडी करो, और उसके बाद में उसको इवेल्युएट करो कि ये राइट है कि रॉन्ग है, वेदर इट इज ऑथेंटिक और फेक, वेदर इट इज रियल और फेक. Clear? So thank you so much class. Make sure that you complete your notes and submit your homework by 1:30 p.m. today. I expect everyone to submit your homework by 1:30 p.m. Okay, and if you have any doubt regarding any session so far, you can message me or you can call me. Okay, thank you so much class for today.